हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन सी चीज जो पता भी है बहुत सारे बच्चों को, बट एक बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही अमेजिंग प्रूफ जो शायद तुमने देखा होगा। बट व्हाई इज दिस प्रूफ एलिगेंट? क्या है इसके अंदर ऐसी खास चीज जो इसको एलिगेंट बनाती है, इस प्रूफ को एलिगेंट बनाती है? इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज सेशन। द प्रोपोजिशन इज देयर एग्जिस्ट इरैशनल्स ए एंड बी। ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो इरैशनल नंबर्स ए एंड बी एग्जिस्ट करते हैं सच दैट a टू द पावर b इज रैशनल। दैट इज in a way we're trying to prove कि irrational to the power irrational can be rational। ठीक है, तो again the English version is there exists irrationals a and b such that a to the power b is rational, a to the power b is rational। इसका mathematical version क्या है? irrational to the power irrational can be rational। How do we prove this and what is so elegant about this proof we're going to see in today's session। Now it does not mean by the way कि किसी भी irrational number की पावर, कोई भी irrational number is always going to be rational। इसका मतलब है irrational to the power irrational can be rational। There's a possibility that अगर मैं irrational की पावर कुछ irrational करता हूं तो वो rational हो सकता है, right? So irrational is something which is very unexplored, particularly in the textbooks। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर दी नहीं हुई है, but again this is something which is इसका proof is something which is very elegant and there's a reason I say that। So again when we say irrational, a lot of irrational numbers come to our mind, right? So pi, e, root 2, root 3, so all these numbers come to our mind। तो यहां पर दो चीजें, we can do two things। one is अगर if I'm able to find two irrational numbers which I surely know are irrational and उसकी पावर एक की पावर एक अगर मैं रैशनल शो कर देता हूं, इफ आई शो दैट पावर ऑफ दिस, इफ आई एम एबल टू गेट two examples of a and b such that a to the power b is rational, I am done, right? So this is like prove that a prime number can be even or an even number can be a prime number। So we all know एक example है 2 is an even number which is also a prime number, right? So एक ये चीज हो गई, right? So if there exists, if I am able to get two numbers a and b such that a to the power b is rational, I am done। But again ये मैं नहीं कर पाऊंगा because I do not know। ठीक है, so all the kind of irrational numbers which I know are pi, e, root 2, root 3, root 5 and so on, cube root of 2 maybe, and किसी भी example से मैं a to the power b को rational नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, now किस तरीके से इसको हम प्रूफ करते हैं? सो ए एंड बी, तो क्या करते हैं? लेट ए इज रूट 2, लेट ए इज रूट 2, ए इज रूट 2 एंड बी इज रूट 2। सो नंबर जो हमारा हो गया दैट इज रूट 2 टू द पावर रूट 2, रूट 2 टू द पावर रूट 2। इज दिस रैशनल, इज दिस इरैशनल? वी डोंट नो, नहीं पता। सो देयर कैन बी टू ऑप्शंस। One is this number root 2 to the power root 2 is rational, the other is this can be irrational। अगर root 2 to the power root 2, if this, case 1, if this is rational, so already मैं example दे गया कि root 2 to the power root 2 is irrational, we all know, and there's a proof, legitimate proof to prove this। root 2 to the power root 2 अगर irrational है, I think we are done, because we've been able to prove कि एक irrational number to the power irrational number is a rational number। But if root 2 to the power root 2 is irrational, if root 2 to the power root 2 is irrational, इस केस के अंदर हम a का वैल्यू a to the power b, a का वैल्यू root 2 to the power root 2 लेते हैं एंड b का वैल्यू root 2 करते हैं। a का वैल्यू रूट 2 टू द पावर रूट 2 एंड b का वैल्यू रूट 2 किया। अब यहां पे a टू द पावर b देखो क्या होगा, रूट 2 टू द पावर रूट 2 पावर रूट 2। सो दिस इज रूट 2 पावर 2 which is 2, which we surely know is rational, and we are done। Now the problem is how does this complete the proof? ये करने से हम कैसे बोल पा रहे हैं कि a टू द पावर b
irrational. A to the power b, where a and b are irrational, is rational. ये how does this complete the proof? This is very important to understand because अगर हमें subjective writing सीखनी है, right? So these kind of elegant proofs have to be done in depth. As simple as that. Now the interesting thing here is मैं A और B क्या है उसका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूं. बट विदाउट गिविंग एन एग्जाम्पल आई एम एबल टू प्रूव कि यार A to the power B रैशनल हो सकते हैं वेयर A and B आर irrational. This is something which is making this proof such an elegant proof. ठीक है, I do not know what A and B are. I do not know whether 2 to the root 2 to the power root 2 अभी इस स्टेज पे रैशनल है या irrational है. We do not know. But irrespective of that, I am able to prove कि A to the power B ऐसे दो irrational numbers हो सकते हैं that irrational to the power irrational would always be rational. Now let us try to understand this proof in depth. किस तरीके से ये proposition proof हो रही है using this. Now what we have done is इस statement को हम P बोल देते हैं. Let's say this statement is P. This particular statement, इस स्टेटमेंट को हम Q बोल देते हैं. इस स्टेटमेंट को Q बोल देते हैं. दिस इज P. नाउ व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? इफ Q इज ट्रू, अगर Q ट्रू है, रूट टू द पावर रूट टू इज रैशनल एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. हमें यही तो प्रूव करना था कि दैट इरैशनल टू द पावर इरैशनल कैन बी रैशनल. सो कैन आई से Q इंप्लाइज P? अगर Q ट्रू है तो ऑफ कोर्स P ट्रू हो गया. दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव अल्टीमेटली. इस पार्ट में मैंने क्या किया है, अगर root 2 to the power 2 root 2 is irrational, that is root 2 to the power root 2 is not rational, that is not Q. अगर Q ट्रू नहीं है तब भी हमने प्रूव कर दिया कि A to the power B, that is root 2 to the power root 2 power root 2 is 2 which is rational, मतलब P यहां से भी ट्रू है. So what I'm able to do is मैंने प्रूव किया कि अगर स्टेटमेंट Q ट्रू है तो प्रोपोजिशन सही है, एंड अगर स्टेटमेंट Q ट्रू नहीं है तब भी प्रोपोजिशन सही है. एंड इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो प्रोपोजिशन ट्रू है. एंड दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाई ये प्रोपोजिशन करेक्ट है. नाउ व्हाई इज दिस प्रूफ इंटरेस्टिंग? एज आई मेंशन्ड एट द स्टार्ट, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर या तो हम एग्जांपल्स दे सकते हैं या इस तरह की प्रोपोजिशन दे सकते हैं, इस तरह का काउंटर दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, I'll repeat the question again. If I had to prove that there exists a even number which is prime, एक even number exists करता है, proposition is there exists an even number which is prime. I can always give an example. 2, ठीक है, 2 एक even number है जो prime है. यहां पर interesting thing ये है कि I am not able to give an example. I am not able to, give A and B, and still I am able to prove A to the power B is rational. So this is what is making this proof such an elegant proof and such an interesting proof. मैं बिना A, B irrational के example दिए हुए I'm able to prove A to the power B irrational to the power irrational can be rational. That if either this is true, if this is true we are done. But if this is not true, then of course then also there would be A and B such that if this is irrational, तो irrational power irrational क्योंकि root 2 तो irrational है ही है. If this is irrational, power irrational is becoming rational. I hope you've understood this beauty, this elegant proof. And ये proof बहुत जगह use होते हैं. We use these kind of proofs in a lot of places wherein we are not able to give direct counter examples, direct examples to prove or disprove things. But using this kind of thing, we're able to prove or disprove a lot of things. I hope you've enjoyed this. Now, what you need to do is put in the comment whether this proposition root 2 to the power root 2 is rational, is it true or not. That means you need to tell whether Q is true or not Q is true. root 2 to the power root 2 क्या rational है क्या irrational है, हमने दोनों केसेस में प्रूव कर दिया है. So without finding this out, without finding whether root 2 to the power root 2 is rational, which we can find out via different things, root 2 to the power root 2 rational है या irrational, without finding this we've been able to prove this. तुम्हारा काम क्या है? Your homework is to find out whether root 2 to the power root 2 is actually rational or irrational and put this in the comment section. I would want to learn and see किस तरीके से तुम इस चीज को अप्रोच कर रहे हो. I hope you've enjoyed this. And
If you're new to this channel, make sure you subscribe to this particular channel because you don't want to be missing out on these awesome stuff, right? So this is a part of Math is Beautiful series where we've discussed a lot of amazing things like prime generating polynomials, Leibniz triangle, Pascal's triangles, 10 unsolved problems of number theory, if and only if, how to counter this, and Fibonacci numbers, their properties, right? So you can follow this playlist. That name is Math is Beautiful series. And you can also consider joining our courses, which are there in the description box. Hope you've enjoyed. Like kar do and share, and do subscribe to this particular channel. Bye all.